Hello everyone, my today's video on a CA final is cast chapter 6. Let's start. But before start, if you like my video then please subscribe and share with others. Now chapter 6 auditing of information system. In this video we are only going through with point wise revision. So let's start here. Now, need for audit of information system. Why we need to audit information system and impact of control and audit influencing an organization. So this is their all point. Organizational cost of data loss, cost of incorrect decision making, cost of computer abuse, value of computer software, hardware and personnel, high cost of computer error, maintenance of privacy and control evolution of computer use. Now, information system auditing and its major objectives. What is the major objective of information system auditing? Then it is asset safeguarding objective, data integrity objective, system effectiveness objective, system efficiency objectives. Now, what is the effect of computers on an audit? कंप्यूटर की ऑडिट पे क्या इफेक्ट होती है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स ऑन अ ऑडिट? तो इसमें दो पॉइंट है. टू बेसिक फंक्शंस कैरिड आउट इन एग्जामिन दिस चेंजेस. चेंज टू एविडेंस कलेक्शंस. इसके अंदर ये पॉइंट है कि व्हाट इज द चेंज टू एविडेंस कलेक्शन? डेटा रिटेंशन एंड स्टोरेज, एब्सेंस ऑफ इनपुट डॉक्यूमेंट्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिट ट्रेल्स. आपको अवेलेबिलिटी नहीं है ऑडिट ट्रेल की, एंड lack of availability of a printed output audit evidence and legal issues. Now that second point is change to evidence evaluations. Here system generated transactions, automated transaction processing and systemic errors. Now responsibility for controls. What is the responsibility for controls? Here you go. It's not important. Now this is the IS auditor. IS include one or both of the following. What? That is assessment of internal control and assessment of efficiency and effectiveness of IS environment. Now what is the skill set of IS auditors? Here sound knowledge of business operation practice and compliance requirement. Then should possess the requisite professional technical qualification and certifications. Then a good understanding of information risk and controls. Then knowledge of IT strategy, policy and procedure controls. Ability to understand technical and manual controls relating to business continuity. And the final point is good knowledge of a professional standard and best practice of IT control and security. Now go with functions. What is the function of IS auditor? IS auditor क्या क्या करेगा? वो चेक करेगा कि inadequate information security control तो नहीं है ना सिस्टम में, like a missing of the antivirus software and without password or weak password or open port system. Then वो चेक करेगा कि inefficient use of resources or a poor governance. For example, use spending on unnecessary IT project like printing resources में ज़्यादा unnecessary use कर दिया है, storage device, high power server and workstations etc. Now third point, ineffective IT strategy, policy and practices. उसकी जो IT strategy और policy है वो including lack of policy for use of information communication technology resources and internal uses policy and security practice. And finally, of course, IT related frauds like phishing, hacking etc. So this is the main function of IS auditor. Now what is the category of information system audits? Information system audit has been categorized into 5 types. You have to remember these 5 types. That is first system and application, then information processing facilities, then system development,
management of IT and enterprise architecture, telecommunication, intranet and extranets. Now, steps in information system audits. What are the steps to do information system audit by auditors? First, वो scope check करेगा, scope and pre-audit survey. Then planning and preparation. Then field work करेगा. और फील्ड वर्क के बाद जो भी डेटा गैदर हुआ उसका एनालिसिस करेगा, स्वॉट और पेस्ट एनालिसिस. एंड फाइनल रिपोर्टिंग करेगा. वो रिपोर्टिंग किसको करेगा? मैनेजमेंट को करेगा आफ्टर एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट गैदर. एंड देन फाइनल पॉइंट इज अ क्लोजर. नाउ ऑडिट स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, या आप स्किप कर सकते हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. नाउ ISO 27001. What is ISO 27701? Is the information security management system and is a systematic approach to manage information security in IS environment, and it encompasses people and processes. ISO 27701 define how to organize information security in any kind of organization, profit or non-profit, private, state-owned, small or large. It is a safe standard and it is the foundation of information security management. Most of the IT software company like Infosys and TCS Wipro uses this. तो आप इतना लिख सकते हो ISO 2770 में, और डिटेल स्टडी इसकी चैप्टर 7 में दी गई है. We'll see it later. Internal audit standard ये skip कर दो. Performance IS audit. Next. While performing, अब यहाँ पे लिखा है performing IS audit. IS auditor जब IS audit perform करेगा ना, तब it's called for a validation in a several ways. वो क्या क्या validate करेगा और कैसे validate करेगा IT डिपार्टमेंट में? तो वो पूछेगा asking different persons the same question and comparing the answer. Then asking the same question in different way at different times. Then comparing checklist answer to work paper, program, documentation, test and other verified results. वो check करेगा. Then comparing checklist answer to observation and actual system results. और फाइनली वो एक मिनी स्टडी कंडक्ट करेगा ऑफ अ क्रिटिकल फेज ऑफ द ऑपरेशंस. सो दिस इज द वैलिडेशन पॉइंट ऑल. एंड नाउ स्टार्ट विद बेसिक प्लान. वो बेसिक प्लान क्या बनाएगा? द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट आर गिवन एज अ फॉलोस. वो देखेगा कि द एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग विल वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द एंटाइटी. वो एंटाइटी की साइज, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑडिट, वो सब देखेगा. देन ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ अ बिजनेस. इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लानिंग वर्क. वो उसका नॉलेज देखेगा, नॉलेज लेगा बिजनेस का कि ये क्या बिजनेस हो रहा है, उसके हिसाब से वो प्लानिंग करेगा. Then auditor may wish to discuss element of overall audit plan and certain audit with the audit committee. वो audit committee के साथ फिर discuss भी करेगा overall plan. Then auditor should develop and document an overall audit plan, describe expected scope and the conduct of the audit. Or finally, the audit should be guided by an overall audit plan and underlying audit program and methodology. अब यहाँ पे ये भी लिखा है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट, while for the all practical purposes, planning is a continuous audit activity which goes on throughout the entire audit cycle. Many times changes in condition or circumstances or unexpected finding will require changes in audit procedures and methodology. Now go with a preliminary review. Preliminary review में है वो देखेगा कि knowledge of a business related aspect are given as a follows. तो वो देखेगा कि बिजनेस का नॉलेज क्या है, वो जनरल इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या अफेक्ट कर रहे हैं, एंड इंडस्ट्री कंडीशन अफेक्टिंग द एंटाइटीज बिजनेस, देन नेचर ऑफ अ बिजनेस, इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज,
general exposure of a business, its client, vendor, most important strategy, level of competence of management and IT management, and finally set up an organization of a IT department. Understanding the technology, अब वो टेक्नोलॉजी भी अंडरस्टैंड करेगा. दिस कुड बी कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग: एनालिसिस ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस एंड लेवल ऑफ ऑटोमेशन. मतलब बिजनेस में किस हद तक उन्होंने सारे ट्रांजेक्शन का ऑटोमेशन किया है, वो सब एनालिसिस करेगा. Then assessing the extent of a dependency of the enterprise on information technology to carry on its business. Means role of IT, success and survival of business. Then understanding the technology architecture, and that is quite diverse from distributed architecture and centralized architecture, a hybrid architecture. Then studying network diagram to understand physical and logical network connectivity. Network diagram study करेगा. Then understanding the extent of enterprise architecture wherein the organization system connects seamlessly with other stakeholders such as the vendor, customer, employee and government. Then knowledge of a various technology एंड उस जो भी टेक्नोलॉजी बिजनेस यूज कर रहा है ना, तो उसका एडवांटेजेस और लिमिटेशन भी देखेगा आईएएस ऑडिटर. एंड फाइनली स्टडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी जो पॉलिसी है, स्टैंडर्ड्स है, गाइडलाइंस है, वो सब स्टडी करेगा. देन अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, then legal consideration of legal consideration and audit standard. उसके पॉइंट है कि auditor should carefully evaluate the legal as well as the statutory implication. Then information system audit work could be required as a part of statutory requirement in which can be issued take into consideration related stipulations and regulation and guidelines for the conduct of its audit. Then लीगल कंसिडरेशन और स्टैंडर्ड में वो देखेगा कि द स्टेटस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में इम्पोज stipulation as a regarded minimum set of control of objective to be achieved by subject organization. उसने जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव मिनिमम सेटअप जो सेट किया है, वो मेट किया है कि नहीं, वो देखेगा. Their IAS auditor should also consider the audit standard applicability to his conduct and performance of a audit work. IAS auditor देखेगा कि audit standard perform हुए है कि नहीं है. Then risk assessment and materiality. Here, additional risk assessment will aid in planning decisions such as planning के decision में risk assessment कैसे आपको benefit करेगा. So the nature and extent timing of audit procedure, area of business functions to be audited, and amount of time and resources to be allocated to an auditor. Now the step can be followed for risk-based approach to make an audit plan is given as follows. Inventory the information system in use in the organization and categorize them. Then determine which of the system impact critical function or assets such as money, material, customer, decision and decision making. Then assess करेगा कि what risk affect this system and the severity of the impact on the business. कौन सा रिस्क सिस्टम को अफेक्ट करेगा और उसकी जो सीवियरिटी है बिजनेस पे जो इम्पैक्ट होगा वो चेक करेगा. Then based on the above assessment, decide the audit priority, decide करेगा resources and schedule and frequency. Now we go for what is the risk of categorize as follows. This is the ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि व्हाट आर द रिस्क ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग. तो इनहेरेंट रिस्क, ATM is the example of the same, and control risk, then detection risk. So basically three type of risk: inherent risk, control risk and detection risk. Then IS audit and audit evidence.
देन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट. द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ एक्शन दैट ऑडिटर नीड टू टेक टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स. First, the use of a special audit technique referred to as a computer assisted audit technique for documenting evidence and elaborate under this part. That audit timing can be planned that auditor is able to validate transaction as they occur in system. Now, inherent limitation of an audit which include, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट व्हाट इट्स इंक्लूड, तो उसमें इंक्लूड होगा नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर्स, देन नीड ऑफ ऑडिट टू बी कंडक्टेड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, ये कीवर्ड है रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम एंड रीजनेबल कॉस्ट. The matter of difficulty, time and cost involved is not in itself a valid basis for auditor or to omit an audit procedure for which there is no alternative or to be satisfied with the audit evidence and pervasive. The matter of difficulty, time and cost involved. Fraud, particularly fraud involving senior management का कोई fraud हो, collusion हो, वो सब. Then existence and completeness of a related party relationship and transactions. Then occurrence of a non-compliance with the law and regulation. This is keyword. Non-compliance of law and regulation. Then finally future events or a condition that may cause an entity to cease to continue as a going concerns. Then provision relating to digital evidence. देन कंकरेंट एंड कंटिन्यूस ऑडिटिंग, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है. टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल्स, स्नैपशॉट, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटीज. नाउ इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटीज में ये पॉइंट है कि मेथड ऑफ एंटरिंग टेस्ट डेटा, देन मेथड ऑफ रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ ITF ट्रांजेक्शन. तो इसमें बेसिकली 2 पॉइंट है इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी में, मेथड ऑफ एंटरिंग डेटा and method of removing the effect of ITF for transaction. Now system control audit review file. So यहाँ पे हमने देखा कि types of audit tools, first है snapshot, second है integrated test facility, उसमें ये 2 पॉइंट, और थर्ड है system control audit review file. Now auditor might use सिस्टम कंट्रोल रिव्यू फाइल टू कलेक्ट द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. अब ऑडिटर सिस्टम कंट्रोल रिव्यू फाइल क्यों देखेगा, तो उसमें से ये सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एप्लीकेशन सिस्टम एरर्स, कोई भी सिस्टम की जो एरर है वो, पॉलिसी एंड प्रोसीजर वेरिएंसेस जो आए हैं वो, सिस्टम की एक्सेप्शंस, देन स्टेटिस्टिकल सैंपल्स एंड स्नैपशॉट एंड एक्सटेंडेड रिकॉर्ड्स. But then profiling data and performance measurements. So these are the things that IS auditor will review by having a system control audit review file. Now we go for continuous and intermittent simulations. Continuous and intermittent simulation during application system processing, CIS execute in the following phase. Now CIS, how you can execute. So the database management system read an application system transaction. It is passed to CIS and CIS then determine whether it want to examine the transaction further. If yes, the next step are perform, or otherwise it wait to receive further data from the database management system. Then CIS क्या करेगा, replicate और stimulate the application system processing को replicate और process करेगा. Then every update to the database that arise from a processing the selected transaction will be checked by CIS to determine whether discrepancy exists between the result and it produced and those application system procedures. Exception identify CIS are written to a exception log. जो भी एक्सेप्शन आइडेंटिफाई होगा ना CIS का, वो सारा रिकॉर्ड होगा एक्सेप्शन
लॉग में रिटर्न होगा। The advantages of CI is that it doesn't require modification. उसको modification require नहीं to the application system and yet provide an online auditing capability. Now, advantages and disadvantages of a continuous auditing. So first go with benefit. Benefit include continuous auditing, reducing the cost of a basic audit assignment by enabling auditor to test a larger samples, up to 100% samples लेगा वो client's transaction and examine data faster and more efficiently than manual testing require. फिर वो reduce करेगा amount of time and cost auditor traditionally spend on a manual examination of a transactions. ऑडिटर जो मैनुअल एग्जाम करने में जितना भी कॉस्ट ट्रेडिशनल स्पेंड करता है ना, उसका अमाउंट और टाइम वो दोनों रिड्यूस कर देगा. और देन इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स बाय अलाउिंग ऑडिटर टू फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ क्लाइंट्स बिजनेस. And finally, specifying the transaction selection criteria to choose transaction and perform both test and control substantive test. Now, what is the advantages of a continuous auditor? Timely and comprehensive and detailed auditing, surprise test capability, information to system staff on a meeting of objectives, and finally training for new users. So these are the advantages of continuous audit. Now we go for what is the disadvantages and limitations of a continuous audit. So auditors should be able to obtain resources required for organization to support the development, implementation, operation, maintenance of a continuous audit technique. Then continuous audit technique are more likely to be used if auditors are involved in the development work associated with the new application system. Auditors need the knowledge and experience of working with the computer system to be able to use continuous. Auditor को भी knowledge होना चाहिए for working continuous audit technique effectively and efficiently. Now, continuous auditing technique are more likely to use where the audit trail is less visible and the cost of error and irregularity is high. जहाँ पे ऑडिट ट्रेल लेस होगा ना विजिबल वहां पे एंड द कॉस्ट ऑफ एरर और इरेगुलरिटी हाई, वहां पे मोर लाइकली ये यूज होगा. और कंटिन्यूस ऑडिट टेक्निक आर अनलाइकली टू बी इफेक्टिव अनलेस दे आर implemented in application system that is relatively stable. So these are the main disadvantages of a continuous audit technique. Now what is audit hook? ये समटाइम आ जाता है, फोर मार्क्स में भी आता है ये क्वेश्चन ऑडिट हुक्स का. सो व्हाट इज ऑडिट हुक? ऑडिट हुक मीन्स द ऑडिट रूटीन्स दैट फ्लैग सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस. फॉर एग्जांपल, जो रूटीन में ट्रांजेक्शन होता है ना बिजनेस का, उसमें जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होता है ना, वो ऑडिट हुक होगा तो डायरेक्टली वो फ्लैग कर देगा. फॉर एग्जांपल, इंटरनल ऑडिटर एट अ इंश्योरेंस कंपनी में जो पॉलिसी होल्डर सिस्टम है ना, वो वुल्नरेबल टू fraud every time policy holder change his name and address and subsequently withdraw the fund from the policy. They devise a system of audit who can take record with the name or address changes. The Internal Audit Department will investigate this take record and detecting a fraud. When audit hook are employed, auditor can be informed of questionable transactions. अगर सिस्टम में बिजनेस में ऑडिट होगा ना, तो ऑडिटर डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा, कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन दिखाई देगा तो. दिस अप्रोच ऑफ रियल टाइम नोटिफिकेशन डिस्प्ले मैसेज ऑन द ऑडिटर्स टर्मिनल. सो दिस इज द ऑडिट हुक, audit routine, and its flag suspicious transactions. और एग्जाम्पल में आप ये भी दे सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी वाला. नाउ व्हाट इज ऑडिट ट्रेल? Audit trail are audit log that can be designed to record activity at the system, application and user level. आगे बढ़ते हैं.
व्हाट इज द ऑडिट ट्रेल ऑब्जेक्टिव? ऑडिट ट्रेल के क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑडिट ट्रेल डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द system and facilitating the reconstruction of events and promoting special accountability. The audit trail objectives 3 है: detecting unauthorized access to the system, facilitating the reconstruction of events and promoting personal accountability. Now, audit and evaluation of a technique and physical environment controls. Role of IS auditor in physical access control. फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में आईएएस ऑडिटर के क्या रोल है? तो वो रिस्क असेसमेंट करेगा, कंट्रोल असेसमेंट करेगा एंड रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेगा. नाउ ऑडिट ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल्स. ऑडिट ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल में ये सारे पॉइंट है. Go through with it. Role of auditor in environmental control, audit planning and assessment. Audit planning और assessment की ये सारे points है as a part of risk assessment. And audit of environmental control. Environmental control के यहाँ पे दिखाया है कि auditor should verify that. ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा? एनवायरमेंटल कंट्रोल बराबर है कि नहीं सिस्टम में, वो सब वो चेक करेगा. देन डॉक्यूमेंटेशंस. मैनेजरियल कंट्रोल एंड देयर ऑडिट ट्रेल्स. कंट्रोल टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल्स. उसके स्कोप सिस्टम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंट्रोल ये सारे दिए गए हैं. नाउ हियर टॉप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल्स. उसमें आएगा कि मेजर एक्टिविटी दैट सीनियर मैनेजमेंट मस्ट परफॉर्म. क्या परफॉर्म करेगा सीनियर मैनेजमेंट? वो प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा एंड देन लीडिंग करेगा, उसको लीड करेगा एंड फाइनली कंट्रोल करेगा. सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल. डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट ड्यूरिंग सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस. concurrent audit, post implementation audit and general audit. These are the three basic points of different type of audit during system development process. Now programming management controller. These are phase and this is the audit trails. यहाँ पे ये दिया है एप्लीकेशन कंट्रोल एंड ऑडिट ट्रेल्स. ये आप एक बार गो थ्रू कर दीजिएगा. कंट्रोल्स क्या क्या है और उसके स्कोप. बाउंड्री कंट्रोल्स, इनपुट कंट्रोल्स, communication control, processing control, output control और database control. So here are 7 type of control और उसके scope दिए हैं. Now what is audit trail controls? Two type of audit trail that could exist in each subsystem. दो टाइप के ऑडिट ट्रेल कंट्रोल होते हैं: अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल एंड ऑपरेशनल ऑडिट ट्रेल्स. बाउंड्री कंट्रोल. दिस इज important to maintain the chronology of event that occurs when user attempt to gain access and employ system resources. वहाँ पे ये boundary control use होगा. Then accounting audit trail, operational audit trail, input controls, operational audit trails, accounting audit trails क्या क्या हो गए. Then communication controls, database controls. यार आगे एक चीज़ है जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है. अप्रोच टू एप्लीकेशन सिक्योरिटी ऑडिट. 3 टाइप्स ऑफ लेयर: ऑपरेशनल लेयर, टेक्निकल लेयर एंड स्ट्रेटेजिक लेयर्स.
अंडरस्टैंडिंग द लेयर्स एंड रिलेटेड ऑडिट इश्यूज। हमने आगे देखा ना कि ये 3 टाइप के लेयर है, ऑपरेशनल लेयर, टेक्निकल लेयर एंड स्ट्रेटेजिक लेयर। नाउ ऑपरेशनल लेयर ऑडिट इश्यू इंक्लूड, ऑपरेशनल लेयर में कौन कौन से ऑडिट इश्यू हो गए, तो यूजर अकाउंट्स एंड एक्सेस राइट के इश्यू हो गए, देन पासवर्ड कंट्रोल के, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। कभी भी बार आ जाता है एग्जाम में, एमसीक्यू में आ जाता है कि एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट व्हाट इज द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। तो record keeper of asset must not be asset keeper. Then cashier who create a cash voucher in system must not have a right to authorize payment, and a maker must not be checker. Then tactical layers, उसमें IT risk management, interface security and audit logging and monitoring. Now स्ट्रेटेजिक लेयर यूज होता है टॉप मैनेजमेंट में, जो भी डिसीजन लेता है वहां पे। एंड नाउ अवर चैप्टर 6 फिनिश। So here in this video we only go through with the point, not with detailed discussion, so we can revise it easily. And if you like my video, then please subscribe and share, and we will meet soon on a next video with interesting and detailed study of ISKA. So bye and have a good day.